Hi students, welcome to the ZAK English Crash Course ZECC 101. This is our next lecture that is about the singular and the plural of the nouns. So we've been learning about the singular and the plurals. This is our next lecture. This lecture is about some nouns which have different meanings both in singular and the plurals. हम जो सीख रहे थे वो सिंगुलर और प्लूरल सीख रहे थे. सिंगुलर और प्लूरल के अंदर कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसकी सिंगुलर में मीनिंग अलग है और प्लूरल में मीनिंग अलग है. सिंगुलर में मतलब अलग है, प्लूरल में मतलब उसका अलग है. आइए देखते हैं ऐसे कौन से नाउन हैं जो सिंगुलर के तौर पर अलग मीनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं और प्लूरल के तौर पर अलग मीनिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ZAK English Crash Course. Okay, the students, we have been learning about the singular and the plural, and today's topic is about some nouns which have different meanings both in singular as well as in the plurals. हम जो सीख रहे थे वो सिंगुलर और प्लूरल सीख रहे थे. और प्लूरल में जो हम सीखेंगे वो ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर के तौर पर एक मीनिंग देते हैं और प्लूरल के तौर पर दूसरी मीनिंग देते हैं. तो वर्ड नंबर वन जो है वो है एयर. एयर मीन्स एटमॉस्फेयर. एयर मीन्स एटमॉस्फेयर. The air of USA is good for living. Means the atmosphere of USA is good for living. The air of Turkey is good for living. Means the atmosphere of Turkey is good for living. Airs means plural के तौर पर airs means affected manners. ऐसे manners जो affected हों उसे airs कहा जाता है. Next word is good. Good means benefit. Good is a noun, not adjective. Good noun के तौर पर means benefit. और good means well-being. Good means benefit. Good means well-being. और goods का मतलब कुछ और है जो कि प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. Goods means the merchandise, the bag and baggage. That is the goods. The next word is compass. Compass in singular means extent और range. Compass singular के तौर पर जो मतलब दे रहा है वो है extent और range का मतलब दे रहा है. और कंपासेस अगर हम कहें तो इसका मतलब क्या होगा? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग सर्कल्स. जो इंस्ट्रूमेंट होता है फिजिक्स के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है सर्कल्स बनाने के लिए, उसे कंपासेस कहा जाता है. एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ड्राइंग सर्कल्स. नेक्स्ट वर्ड इज रेस्पेक्ट. रेस्पेक्ट इज अ नाउन मीन्स द रिगार्ड. रेस्पेक्ट नाउन के तौर पर जब इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब क्या है? रिगार्ड मीन्स समझना. ओके. रेस्पेक्ट मीन्स the compliments. Respects as a plural means the compliments. Okay. Next word is physic. Physic as a singular means the medicine. Physic अगर singular के तौर पर इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होगा medicine. और physics means the natural science, the subject, the physics of the subject, the physics subject. Physics is my favorite subject and English is also my favorite subject. The next word is iron. Iron in singular means is a kind of metal. आयरन सिंगुलर के तौर पर अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब होता है अ काइंड ऑफ मेटल. ओके. और इस आयरन्स अगर प्लूरल में आयरन्स को अगर हम प्लूरल में इस्तेमाल करें तो आयरन्स मीन्स द फेटर्स. FETTERS. आयरन्स मीन्स फेटर्स. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज फोर्स. फोर्स मीन्स strength. I'm strong. I've got a force to fight you. So force means the strength. Forces means troops. The military, that is called the forces in English as a plural, as a noun. Okay, the students, this was all about the nouns which have different meanings both in singular as well as in the plurals. We have learned the 7 words. There are many other words as well. We have learned 7 words. The first word was air. Air means attempt. Airs means affected manners. Second word is good. Good means benefit, well-being. Goods means the merchandise. Next word is compass. Compass means extent or range. Or compasses means an instrument for drawing circles. Next word is respect. Respect means a regard. Respects means plural के तौर पर respects means the compliments. Next word is physic. Physics means the physic. Physic means medicine. Physics means the natural science. Next word is iron. Iron means a kind of metal. A kind of metal. Irons means the fetters. Next word is force. Next and the last word is the force. Force means the strength. Strength is a singular. Forces means the troops, the military. This was all about some nouns which have different meanings both in singular as well as the plural. See you in the next lecture. Hi students, welcome to the next part.
Hi students, welcome to the ZAK English Crash Course ZECC 101. We are learning about the singular and the plural. This is the next part of the singular and the plurals, and we are going to learn about some nouns which have one meaning in the singular and the two meanings in the plurals. So let's see that what are those nouns which have got one meaning in the singular and the two meanings in the plurals. So let's get started. ZAK English Crash Course. हम जो सीख रहे थे वो था सिंगुलर और प्लूरल के बारे में. हमने जो सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा था उससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम आज सीखेंगे कि एक नाउन जब सिंगुलर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है मीनिंग दो हो जाती हैं. ऐसे कौन से नाउन्स हैं? आइए देखते हैं ऐसे कौन से नाउन्स हैं. Noun number one, that is the color. Color means H-U-E, hue. Hue means color. Color means hue. That is in singular. Singular के अंदर color का मतलब है hue. और plurals के अंदर colors means the hues. और इसका दूसरा मतलब है the flag of a regiment. एक regiment का flag. It has got two meanings. One meaning in singular and two meanings in the plural. Next word is the custom. Custom in the singular means the habit. Custom जो word है उसका singular में मतलब है habit, और plurals के अंदर customs का क्या मतलब है? results. Customs का क्या मतलब है? habit, tradition. Customs का मतलब है habit और habits. Customs का मतलब है habits और traditions. और इसका दूसरा मतलब है duties levied on imports. जिसे टैक्स कहा जाता है, that is called the custom tax. Word number 3 is effect. Effect का singular में मतलब है result, outcome. Effects का plural में मतलब है results in plural, और effects का plural में दूसरा मतलब है property. Results और property in singular. Next word is manner. Manner in the singular means the method, the way, the pattern. That is called the manner. In the singular it has got one meaning. In the plural means manners. In the plural manners means the methods. और manners का plural में मतलब है correct behavior. That is called manners. उसके manners ही ऐसे हैं, हम कहते हैं ना, उसके manners ही ऐसे हैं means the correct behavior of a person. Okay, next word is moral. Moral is very famous word. So in the singular के अंदर moral का मतलब है a moral lesson. The moral of this story is, for example, हम कहते हैं ना इस story का moral ये है, moral of a story. Okay, morals means number one, the moral of a lesson, moral of a story and moral of a lesson. And the second meaning is the conduct or the behavior. So moral has got two meanings. In singular it is a moral lesson, and in plural morals means moral lesson, or the second word is the conduct or the behavior. The next word is the number. Next word is a number. Number means quantity in singular. But in plural, numbers means the quantities. The first meaning is the quantities. The second meaning is the verses and the quantities, two meanings of the one single word. Okay, the next word is pain. Pain means the suffering. Pain means suffering. और plural के तौर पर अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? pains means sufferings. और इसका दूसरा मतलब है care. Pains means sufferings, pains means care means exertion or care. Okay, next word is premises. Next word is premise. Singular के अंदर इसका मतलब है proposition. Premise means proposition. ऐसी जगह जो किसी के काम के लिए रखी गई हो, that is a premises of the government. This is a premise of the public property. Like that. Premise means proposition, or premises means positions, and premises means the buildings. So one word has one meaning in the singular and two meanings in the plural.
This was all about the some nouns which have one meaning in the singular and two meanings in the plural. Let's switch over to another topic. Take care.